अभी नहीं शुरू सर, किया अभी है। नहीं, अभी नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। It is sharp 12 when we are live now. Okay. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Susan. Good morning. Good morning. Good morning, Dr. Yadav. Good morning. Great fleas have little fleas upon their back to bite them, and little fleas have lesser fleas, and so add up to an add up to infinity. Augustus de Morgan said it in 1872. Sustenance of immune system are not restricted to human beings. Emerging infectious diseases have as much potential to shape future human history. As the epidemics and pandemics of the present and the past, managing this threat depends upon understanding to maximize the potential of our sophisticated immune system in the service of human health. Eating a balanced diet with the right amount of nutrients daily will help maintain the normal functioning of our immune system. Taking food with adequate vitamins A, C, and D, and minerals including zinc will play a role in the functioning of immune system. We need vaccines and drugs to treat the diseases, especially COVID-19 at the moment. Computational methods in drug design and drug discovery and drug delivery cannot be underestimated. The efficiency of drug delivery and designing process be increased by effective strategies given by computational methods. Drug design is an intense, time-consuming, and an interdisciplinary venture. Traditionally, drugs were discovered by synthesizing compounds in a long, drawn-out and multi-step process. Recent studies have shown an increase in day-by-day demand of novel and more efficient drugs. Due to availability of low-cost computer power, the use of such computers has become a leading topic in medicinal chemistry. In search of potent drug, computational techniques like docking, homology, modeling, pharmaphore modeling are employed by researchers around the globe in order to achieve the goal. The drug design process and role of computational modeling techniques of binding site prediction to high throughout screening of large compounds libraries. At this moment, when the COVID-19 pandemics have spread all over the world, let's look up to God to have a good immune system for each and everyone and to discover drugs and vaccine for COVID-19. Let us listen to a song sung by Dr. Ananda V.K. Anand, Teri Aradhana. Morning, sir. Let us listen to Teri Aradhana, song sung by Dr. Ananda V.K. Anand, Department of Chemistry. We are
तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का गान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का गान। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Thank you, ma'am. May God help the medical researchers team to find a solution that is a drug and a vaccine for 8 million people all over the world. Now let's move on to the next event of the webinar, introduction of webinar to our delegates. I would like to request our honorable principal, patron, Professor S.P. Singh sir, who is a motivator and a constant support for the entire department of chemistry and as well as other departments of the college, to organize this international webinar, lecture 5, to our participants. Professor S.P. Singh sir. Thank you, Dr. Suzette Varghese, and a very good afternoon to everyone present here. It is indeed, as we all are aware of, these times are quite a challenging time. And as it is the spirit of human beings, we invariably rise to meet these challenges. All over the world, whereas our regular modes of communications are disrupted, processes of communication, of learning, of growth carry on unhindered. Yesterday night, I was a part of a webinar planning for a group that specializes in reskilling and adult learning facilitation. And it was quite an interesting time. We had people from different continents, from different time zones, sharing their stories, how pandemic has really disrupted lives there, how people are trying to constantly rise to meet those challenges. And one of the critical things that is required is reskilling, enlarging our knowledge space, and adapting continually to the dictates of the world, which seeks to emerge with us or without our active
intervention. In this series, it is indeed a great pleasure to witness the Department of Chemistry has organized this international webinar series. And we had some very useful, very insightful, very interesting conversations around the issues that are of great importance to us as individuals, as conscientious citizens, and of course, as the students of chemistry. Today, indeed, it is my great pleasure and delight to welcome Dr. Alim Hussain Jaidiji in our midst and Dr. Arshi Naqvi. Both of them are a part of our college family, and it is indeed a great delight to welcome them on St. John's College Forum as a resource person. And I'm sure as Dr. Alim Jadi talks about sustainable utilization of plant resources, who started I request the delegates kindly mute your mic. I request all the delegates. So, in that context, we find that immunity system has been foregrounded, the need for it, because suddenly we find that this onslaught of this virus has left our entire defenses to immune system. At the same time, as the students of chemistry, it would be wonderful for us to have a talk on computational methods and tools for sustainable drug design, screening, and development by Dr. Arshi Naqvi. So I take this opportunity to welcome the resource persons on behalf of St. John's College. And also I extend a very hearty welcome to all the participants who have gathered here this morning. Thank you. Thank you, sir, for the wonderful words of wisdom, and especially today the resource persons are joining from abroad from Kingdom of Saudi Arabia. So thank you for motivating and encouraging the research in the field of immunity and the field of computational drug design and delivery system to our participants as well as our delegates. Now, before let me go to my next event, let me introduce and I welcome our Honorable Dr. D.S. Setsa. He is a former Associate Professor of Department Chemistry. He worked in St. John's College for almost more than 40 years. He spent his college life as well as his research, and then he became a member of staff in Department of Chemistry. Today, our resource person, Dr. Arshi Naqvi, has done research under sir's supervision and reached that the field of him made her reach to that height. So, sir, we need your blessings on today's program and as well as for our future of our Department of Chemistry also. We welcome you to this function, sir. And I would like to welcome Dr. Yadavendra Singh Yadav also. He's also joining us from Ghaziabad. And now Thank you, Dr. Susan. Thank you. Now I hand over to Dr. Praveen Tyagi, co-convener of Department of Chemistry, to introduce our speakers. Introduce our speakers. Let him introduce first Dr. Alim Hussain from Kingdom of Saudi Arabia to our participants. Dr. Praveen Tyagi.
Hello, Dr. Praveen Tyagi, can you hear me? I think his Hello, Dr. Praveen, Dr. his Praveen audio is Tyagi, having can you hear? his audio is having some issues. Okay. Okay. Okay, sir. So let me introduce then. Okay. Then let me introduce Dr. Alim Hussain. He's a CEO of Sehat Life Care Private Limited, Lucknow, UP, India. And he's also a medical consultant, Unity Hospital and Maternity Center, Lucknow, UP. And he's also a visiting professor of chemistry in chemistry department, Taiba University, Al Madina, Kingdom of Saudi Arabia. And he has many publications and presentations in international and national journals of repute. And he is going to speak about the immune system to our delegates. So we welcome Dr. Alim Hussain from Saudi Arabia to our international webinar. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay. आपने मौका दिया. मैम इसमें स्क्रीन शेयरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रही है. पोस्ट डिसेबल पासवर्ड स्क्रीन शेयरिंग. Okay. Please, we're just enabling that. Please Share screen. now you can. Yes, you can. Thank you. Sorry. I am Dr. Alim Hussain, and today's topic is sustainable utilization of plant resources to boost our immunity. And आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, इम्यूनिटी क्या होती है, लो इम्यूनिटी के सिम्टम क्या है, और हमारी इम्यूनिटी लो हो क्यों जाती है, और अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो हम उसको बढ़ाएंगे कैसे, आसपास की चीजों से, प्लांट रिसोर्सेज से, और कुछ प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम है क्या. एक्चुअली मैम आज से कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ जो भी बातचीत होती थी, जब भी डिस्कशन होता था, पूरी दुनिया जिस बारे में प्रॉब्लम में थी, परेशान में थी, वो कुछ डिजीज के बारे में थी. जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, रीनल फेल्योर है, शुगर है, ओबेसिटी है. जैसे अमेरिकन से उनकी अलग प्रॉब्लम है, इंडियन की अलग प्रॉब्लम है. जैसे अमेरिका में 2 टाइप के लोग मिलेंगे आपको, एक सुपर फिट और सुपर ओबेज. तो वहाँ की अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे यहाँ की कम्युनिटीज थोड़ा सा अलग तरीके की हैं, तो हमारे यहाँ की थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम्स है. लेकिन इधर पिछले 3-4 महीनों से ये जो कोरोना वायरस है, इसने पूरी दुनिया को एकदम बदल दिया है, हमारा जीने का तरीका बदल दिया है. मतलब पहले अगर हम रोड पर चलते थे तो हम अपने यहाँ सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया के अंदर मतलब हमें ऐसी कम्युनिटी मिलेगी, सड़क पे हजारों लाखों लोग मिलेंगे जो मास्क लगाए हुए होंगे. लेकिन बहरहाल अब जैसे हम लोगों ने ओबेसिटी के साथ रहते थे, हाइपरटेंशन के साथ रहते थे, रीनल फेल्योर जैसी डिजीजेस के साथ रहते थे, वैसे अब हमको इस कोरोना वायरस के साथ भी रहना पड़ेगा. अब चूंकि ये सब डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन थी, लाइफस्टाइल डिजीजेस में आती थी, इसी तरीके से अब जब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो अगर हम इस कोरोना वायरस के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो सबको पता चल चुकी हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग सफर कर रहे हैं इसके साथ बहुत ज्यादा. लेकिन इसमें एक बात तय है कि अभी इसका इलाज अभी नहीं निकल पाया है ठीक तरीके से, कि हम किस तरीके से इसको फेस करें, किस तरीके से इसको मैनेज करें. तो जब भी इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं, इसके इलाज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मैम एक चीज जरूर सामने आती है कि इम्यूनिटी, कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है
क्योंकि हमने देखा कि अमेरिकन में डेथ ज्यादा हुई क्योंकि डिजीज एक ही है। हमारे कंट्रीज में थोड़ा सा इस टाइम नंबर ऑफ डेथ कम है कहीं, मतलब इसका अभी हमें इसके फैलने का तरीका ही नहीं पता कि ये फैल किस तरीके से रही है। एक घर है, उसके अंदर 5 लोग हैं, उसमें से 2 को हो जा रही है, 3 को नहीं हो रही है, 4 को हो रही है, 1 को नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें, जब हमें इसका इलाज ही नहीं पता, इसके बारे में पता ही नहीं क्या है, तो जब हम किसी से भी डिस्कस करते हैं तो बस एक चीज हमारे सामने जरूर आ रही है कि इम्यूनिटी। मतलब अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो बच जाएगा, और अगर स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सफर करेगा इसमें, और सफर करने में उसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन वो डेथ तक पहुंच सकता है। तो आजकल की एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हम सारे लोग घरों में बैठे हुए हैं, हमें फ्रेश एयर भी नहीं मिल पा रही है, सनलाइट हमें नहीं मिल पा रही है, जो थोड़ा बहुत हम बाहर घूम लेते थे तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती थी वो नहीं हो पा रही है। तो बेसिकली ऐसा क्यों है कि कुछ लोग के ऊपर ये डिजीज अच्छे से वर्क कर रही है, कुछ लोगों को परेशान कर रही है, कुछ लोगों को परेशान नहीं कर रही है। तो ये बेसिकली जो गॉड ने हमारे अंदर एक सिस्टम बनाया है बीमारी से लड़ने के लिए, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। अगर वो किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तब वो अच्छे से बीमारी से लड़ पाएगा, और इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली ये इम्यून सिस्टम जो होता है ये प्रोटीन्स का और सेल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमारी बॉडी डिजीज से लड़ती है। और अगर ये इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा तब हम इस डिजीज को मात दे सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी तो हम ये डिजीज हमको परेशान कर सकती है। तो फिलहाल हमको इसके अंदर ये देखना है कि हमको इम्यूनिटी, जो बाहर से हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं उनको रोकने की जो हमारी बॉडी के अंदर पावर होती है, हम उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। बाहर से जो पैथोजेंस, वायरस और जो अलग अलग तरीके के हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं उनको हमारी बॉडी जो फाइट करती है, लड़ती है, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। ये 2 तरीके की होती है। एक तो इम्यूनिटी ये है जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है और हमको पता नहीं है, लाखों करोड़ों वायरस आते हैं हमारी बॉडी में, लड़ते हैं, फाइट करते हैं, और फाइट करके अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। वो एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से होता है। एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हमको वायरस से या हमको बाहर से इम्यूनिटी बूस्टर्स डालने पड़ते हैं और बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाते हैं और वो उस डिजीज से लड़ते हैं। अब बात आती है मैम कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी की इम्यूनिटी कम है, क्योंकि इस टाइम तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे लोगों को एक कोई ऐसी दवा दे दी जाए कि पूरी कंट्री सारे लोग ये दवा खाते रहिए, वो दवा खाते रहिए, तो नॉर्मल लोगों को भी लगेगा कि जैसे हमको बीमार कर दिया गया है। इस बीमारी के साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसमें हमको डरा बहुत ज्यादा दिया गया है। यानी अगर हम किसी को भी कॉल करते हैं तो हमारी कॉलर ट्यून बोलने लगती है कि आप इस बीमारी से बचिए और प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारे साथ लोग हैं उसमें किसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, किसकी इम्यूनिटी वीक है? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि अगर किसी किसी को हर कुछ कुछ दिनों में एलर्जी हो रही है, बुखार आ रहा है, किसी का बीपी इंक्रीज हो रहा है, डाउन हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को बार बार नींद में कमी आती है, सही से वो सो नहीं पाता, किसी का एनर्जी लेवल लो है, या किसी को अगर कोई इंजरी हो जा रही है और वो हील नहीं कर पा रही है, तब ये माना जाता है कि उस इंसान की इम्यूनिटी वीक है। अगर मैं अपने वर्ड्स में कहूं तो आप जिस प्रोफेशन में हैं, अगर आपका अपने प्रोफेशन में दिल लग रहा है और आपको भूख अच्छे से लग रही है और आपको वॉशरूम अच्छे टाइम पर हो रहा है, तब समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो बॉडी में किसी इंसान की इम्यूनिटी लो है, किसी की इम्यूनिटी हाई है, ये ऐसा हो क्यों जाता है? नेचर ने सबको तो एक जैसा बनाया था। तो ये हमारी जो डेली लाइफ की चीजें हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, इम्यूनिटी को वीक करते हैं। जैसे आप मैम मान के चलिए, जैसे पास्चराइजेशन है मिल्क का,
अगर आपने मिल्क को पास्चराइजेशन कर दिया तो कहीं ना कहीं उसके एक्टिव सब्सटेंस जो है वो आप किल कर देते हैं, तो जो बॉडी में जो जरूरत पड़ने की जो उसकी बिल्डअप कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं आप खत्म करते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, अलग अलग तरीके, एक बात और मैं कहूंगा कि जो मार्केट में पैकेट फूड मिलते हैं ये पैक रहने के लिए होते हैं, ये खोलने के लिए नहीं होते हैं। आप इनको ना खोलिए, मतलब इनको ना खाइए। तो ये पैक्ड फूड, इनमें सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपको सही से रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, आप अलग अलग तरीके के रिफाइंड ऑयल्स यूज कर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं तब आप कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी को डे बाई डे किल कर रहे हैं। अब मैम मैं जनरल वर्ड्स में अगर कहूँ तो हमारे किचन के अंदर भी कई तरीके के जहर होते हैं। हमें किसी न किसी तरीके से एक एक करके हमें उन जहर को कम करना पड़ेगा। जो सबसे पहली मैम स्लाइड थी उसमें मैंने दिखाया था कि एक लड़का फाइट कर रहा है बाहर के पैथोजेंस से। अगर आप कंपेयर करिए तो मैम 50 साल पहले भी हम थे, 100 साल पहले भी हम थे, 200 साल पहले भी हम थे। हम लोग जंगों में रहते थे और पहले लड़ाइयाँ जो होती थी उनमें ऐसे ऐसे हथियार यूज होते थे कि अगर एक बार हल्के से वो तलवार टच करके भी निकल जाए तो बचना मुश्किल हो जाता था इंसान का। लेकिन वो लोग फाइट करते थे, घायल होते थे और 3 महीने बाद फिर वहीं खड़े होते थे जंग के मैदान में लड़ने के लिए। आज मैम अगर धोखे से भी किसी को हार्ट अटैक हो गया है, कोई बात हो गई, तो आप समझ लीजिए डॉक्टर उसकी लाइफ को ऐसा बता देता है, सुबह ये दवा, शाम ये दवा, दोपहर ये दवा, आपको सीढ़ी नहीं चलना है, आपको ऐसे नहीं चलना है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना है। मतलब उसकी जिंदगी मतलब एक तरीके से बोझ बन जाती है। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 100 साल में और अब, कि पहले जो हम 100 साल की एज हम गुजार देते थे, और आजकल अगर किसी को 80 ईयर 90 ईयर का देख लेते हैं तो उसे मतलब समझते हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई। बहरहाल एक्टिव फॉर्म में 80 ईयर और 90 ईयर तक आदमी आजकल नहीं पहुंच जाता। तो ये जो हमने अपने किचन के अंदर पॉइजन घुसा लिए हैं इसको निकालना पड़ेगा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और सबसे आसान पॉइजन जो है वो व्हाइट पॉइजन है। ये जो 4-5 व्हाइट पॉइजन है जिसके अंदर सबसे पहले आता है नमक, ये जो आयोडाइज्ड नमक है व्हाइट पॉइजन में आता है। शुगर व्हाइट पॉइजन के अंदर आता है। मैदा, रिफाइंड ऑयल, पास्चराइज्ड मिल्क, ये सारे सफेद जहर के अंदर आती है। तो किचन के अंदर से अगर आप ये सफेद व्हाइट चीज अगर आप निकाल देंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। उसके अलावा मैम असल में होता ये था कि पहले अगर डॉक्टर कहता था, जैसे इस टाइम आम का सीजन चल रहा है, अगर डॉक्टर कहता था कि आपको आम खाने हैं तो इसका मतलब ये होता था कि हम लोग बाग में जाते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, आम तोड़ते थे, खाते थे। तो कितनी एक्सरसाइज उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती थी। अब आज का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि अगर कोई कहता है कि आम खाना है तो फोन कर देता है और घर पर कटे हुए आ जाते हैं। और बच्चों को तो और आसानी हो गई, वो तो कहते हैं मैंगो शेक पियेंगे। अब मैंगो शेक बनाने के अंदर हम उसके अंदर शुगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, कई चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसे हमें टेस्टी बनाना होता है। तो थोड़ा सा अगर हम इन चीजों से बचेंगे, थोड़ा सा दूर रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और हम बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अब मैम बात आती है कि अगर हमें अपनी इन बीमारियों से बचना है, खासकर आजकल कोविड-19 जो बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है, जिससे बचना है तो हमें प्लांट रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि यही है, एक बात हम आपको बताएं मैम कि ये कहा जाता है कि जो सबसे सस्ता खाना होता है वो सबसे अच्छा खाना होता है। जैसे आजकल आम का सीजन है, आप आम खाइए, आजकल सस्ते मिलेंगे। अब आप जनवरी में ढूंढेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे, उस टाइम मिलेंगे। ये कुदरत ने, भगवान ने इस सीजन के लिए आपकी बॉडी के हिसाब से डिजाइन करके इस सीजन में भेजा है, तो आप उसे खाइए, सस्ता भी मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। जिस सीजन में लौकी आती है, जिस सीजन में भिंडी आती है, आप सीजनल सब्जी लीजिए, सस्ती मिलेगी। मैम एक प्रॉब्लम और ये हो गई है कि पहले हमारा जो किचन था वही पूरा फार्मेसी की तरह वर्क करता था, अभी भी कर सकता है, लेकिन पहले हम लोग को पता होता था, जो हमारे घर की औरतें होती थी उनको पता होता था कि किस मौसम में कौन से मसाले डालने हैं। आजकल मैम प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेहमान आया तो उसके लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें अच्छा, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। फौरन एकदम मार्केट से बेहतरीन पनीर आएगा, बेहतरीन चिकन आएगा। अब उसमें हम लोग मौसम नहीं देखते हैं और न टाइमिंग देखते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम इन चीज़ों पे गौर करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी।
मैम ये नेचुरल, अगर हमको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है, हमको नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो हमें अपने आसपास की ही चीजें देखना पड़ेंगी। आपका किचन जो है अपने आप में पूरी फार्मेसी का एक काम कर सकता है। मैम मैं आपको, थोड़ी सी अलग बात है लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप हल्की सी बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब करता है, तो उसमें आप ये जानिए, उसमें डॉक्टर को तो फायदा होता है, मेडिकल स्टोर वाले का फायदा होता है, फार्मेसी कंपनी का फायदा होता है। पेशेंट को फायदा हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम है, फायदे और नुकसान का सिस्टम है, तो उसमें अक्सर आपकी हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाता है। तो क्यों ना हम अपनी हेल्थ इस तरीके से बना के रखें कि इन सब चीजों की हमको जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि कुदरत ने बीमारियां दी हैं, गॉड ने, नेचर ने हमको बीमारियां दी हैं, तो हमें उससे बचने की सारी चीजें हमारे आसपास ही रखी हैं। आप इन बीमारी को इस तरीके से समझिए कि नेचर ने जो हमें जिस गाइडलाइन पे चलने के लिए बताया था, हम अपनी उस गाइडलाइन से थोड़ा सा हट गए हैं, तो हमें उस गाइडलाइन से हटने के लिए जो हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है वो हमारी बीमारी। अब आप उस टैक्सेस को रिड्यूस करना है, यानी जो जो आपको नेचर ने बताया है आपको उस तरीके से चलना है। अगर आप वैसे चलेंगे, आप उन प्लांट सोर्सेस का अच्छे तरीके से यूज करेंगे, तब आप उन बीमारियों से बच सकते हैं और इवन उन बीमारियों से आप इलाज भी कर सकते हैं। अब मैम बहुत ढेर सारी बीमारियां हैं और लाइफ स्टाइल डिजीज हैं जिन्हें डिजीज ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन उनमें हम लोग अक्सर, हमें बड़े बूढ़े भी बताते हैं कि ये खाओ तो ये फायदा देगा, ये खाओ तो ये फायदा देगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम वो चीज खाते हैं और उतना अच्छा फायदा नहीं मिलता है? लेकिन हम यहाँ पर दो सिस्टम चलते हैं इलाज के। एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम चलता है जिसके अंदर हमको पता होता है कि इसके अंदर इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना विटामिन है, इतना, ये सारी चीजें हैं। और दूसरा एक एक्सपीरियंस बेस्ड थेरेपी है जो लाखों साल से चलती चली आ रही है। उसका एविडेंस मिले ना मिले, लेकिन उसका फायदा दिखाई देता है हम लोगों को डायरेक्ट। अब अगर हमें किसी प्लांट सोर्स का हमें यूज करना है, तब हमें उसके लिए कुछ चीजें देखना होती हैं। अगर हम उन चीजों को सही तरीके से देख लेंगे, उस स्ट्रक्चर में अगर हम डाल लेंगे, उस कस्टमाइज वे को अगर हम फॉलो कर लेंगे, वो बहुत अच्छे से काम करती है। श्योर शॉट एक तरीके से आप मान सकते हैं। अब उन चीज को देखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। उन प्लांट रिसोर्सेज को यूज करने के लिए अगर हम कुछ पॉइंट्स को देख लें कि किन बचना है और किन किन पैरामीटर्स पर उन्हें यूज करना है, तब हम उन प्लांट्स का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। इवन आप यकीन नहीं कर सकते कि आपके किचन में इस्तेमाल होने वाली हल्दी, लौंग या ककड़ी, ये सारी चीजें आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को किल कर सकती हैं। अब सबसे पहले जो प्लांट रिसोर्स यूज करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनको को अगर हम ध्यान में रखें, जैसे सबसे पहले हमें देखना पड़ता है एयर को, यानी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे ज्यादा फैक्टर इफेक्ट करते हैं आसपास के, उनमें सबसे पहला नंबर मैंने डाला है एयर का। तो एयर का मतलब मैम, अगर आप एयर की बात करें तो हर जगह की एयर होती है, हर जगह की एयर अलग अलग तरीके की होती है, हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग तरीके का होता है। जैसे आप अमेरिकन कंट्रीज में जाइए, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, यूरोपियन का एटमॉस्फेयर अलग है, केरला का एटमॉस्फेयर अलग आपको मिलेगा, पहाड़ी इलाकों का अलग मिलेगा, साहिली इलाकों का अलग मिलेगा, नॉर्थ का अलग मिलेगा। तो मैम अगर आप हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहाँ अलग मिलेगा, लोअर पर जाएंगे तो वहाँ अलग मिलेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें ठंडे एटमॉस्फेयर में, कोल्ड एटमॉस्फेयर में कौन सी चीज खानी है, गर्म एटमॉस्फेयर में कौन सी चीज खानी है। ऐसा नहीं है कि पता चला कि कोई ऐसी चीज है जिसकी तासीर ठंडी है और हमने उसको ठंडे ही एटमॉस्फेयर में दे दिया तो और नुकसान दे जाएगी वो। उसके बाद में हम दूसरा पॉइंट हमको देखना पड़ता है फूड एंड ड्रिंक, खाना और पीना। तो मैम मॉडर्न सिस्टम के अंदर खाने और पीने को 3-4 पार्ट्स में बस डिवाइड कर रखा है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, कैलोरीज, एंटीऑक्सीडेंट। बस इसमें डिवाइड करके बता दिया जाता है कि बॉडी वेट के हिसाब से कोई भी पेशेंट गया, उसने कहा कि डॉक्टर ने आराम से उसे विटामिन ई लिख दिया कि आप लीजिए खाइए, विटामिन लिख दिया बॉडी वेट से कैलकुलेट करके। लेकिन हम ये कहीं ना कहीं ये वाली बात सही नहीं है, क्योंकि अगर हम खाने पीने की बात करें तो हर उम्र का खाना पीना अलग होता है, हर जगह पर रहने वालों का खाना पीना अलग होता है। जैसे अगर पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं तो वहां पर आरबीसी ज्यादा होती है, तो अगर हम और ऐसा कुछ हम खाने को दे देंगे जो आरबीसी और बढ़ जाए तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब कहा जाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो है विटामिन सी है। अब आप किसी ऐसे इंसान को जैसे बीच बीच में बार बार नजला होता हो,
अगर आप उसको कह देंगे लीजिए आप नींबू खाइए, तो उसका तो नजला और बढ़ जाएगा, उससे तो प्रॉब्लम और हो जाएगी। मैम, हमको खाने पीने का एक अच्छे से सिलेक्शन करना होता है कि किस उम्र में हमें कौन सा खाना होता है, कौन सा बॉडी टाइप है। कोई इंसान ओबेज है तो उसको कौन सा खाना खाना है, किसकी बॉडी की हरकत किसी को ज्यादा करना पड़ती है, यानी कि किसी को फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करनी पड़ती है तो उसको क्या खाना खाना चाहिए, किसी की फिजिकल एक्टिविटीज कम है उसको क्या खाना खाना चाहिए। अगर एक मजदूर है जो दिन भर काम करता है वो क्या खाना खाएगा, और एक इंसान जो ऑफिस में बैठ के 8 घंटे वर्क कर रहा है उसका खाना कैसा होना चाहिए। सबका खाना अलग अलग होता है। तो अगर हम पेशेंट को देखें, उसका लाइफ स्टाइल देखें, उसका बॉडी टाइप देखें, उसकी वर्किंग देखें, उसके हिसाब से अगर हम खाना उसको डिसाइड करेंगे तो वही खाना हमारे लिए दवा का वर्क करेगा, दवा की तरह काम करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है मैम, सबसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज जो होती है वो सही टाइम पर सोना और सही टाइम पर जागना। अगर आप ये शेड्यूल मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारगर होता है। कि अगर आप इसका मतलब ये सब चीजें मैम ऐसी हैं कि आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। जैसे अगर कुछ लोग होते हैं जो रात भर जागते हैं तो सुबह उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर उन लोगों को जिनका बॉवल मूवमेंट इतना वीक है, तो अगर बिल्कुल अपने सोने और जागने का टाइम बिल्कुल एकदम फिट कर लें, सही टाइम पर सोएंगे, सही टाइम पर जागेंगे, तब उनको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मेंटल स्टेटस के ऊपर दवा वर्क करती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो डरते बहुत ज्यादा हैं, जैसे अभी कोविड-19 प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ लोग हैं आराम से घूमते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग इतना डरे हुए हैं कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं बिल्कुल। तो मैम, खाना खाने पीने के ऊपर डर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। अगर आप डरते हैं तो उसी हिसाब से खाना पीना आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। कम डरेंगे, अब ये भी नहीं कि इंसान बिल्कुल एकदम बेफिक्र हो जाए, और ये भी नहीं कि इतना डर जाए कि निकलना ही छोड़ दे, बात करना ही छोड़ दे, चीजों को खाना खाना ही छोड़ दे। तो एक बैलेंस वे में हमें अपने डर का इस्तेमाल करना होता है, और ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो पेशेंट को बताए कि आज ये डिजीज आपके लिए कितनी खतरनाक है, कितनी सही है। तो अगर आप अपने उस मेंटल स्टेटस का यूज करेंगे तब आप खाने पीने की चीजों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका खाना पीना ही आपके लिए फार्मेसी का काम करेगा। उसके बाद जो एलिमिनेशन और रिटेंशन, ये एक ऐसी चीज है मैम, इन सब के बावजूद भी अगर आप ये देखते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि 4 लोग खड़े हुए हैं, बारिश हुई, एक की तबीयत खराब हुई, 3 की नहीं हुई। मतलब आप समझिए कि बहुत से चीजें हैं कि देखने में पेशेंट बिल्कुल एक से लग रहे हैं, या लोग बिल्कुल देखिए इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टहल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई एक खास चीज देने पे उनके बॉवल मूवमेंट बढ़ जाते हैं, उनको मोशंस बढ़ जाते हैं, और एक पेशेंट है उसको नहीं बढ़ता है। तो अगर हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रख के अगर हम अपने खाने पीने की चीजों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तब हमारे किचन और हमारी आसपास की ही चीजें बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगी। और इवन आपने आजकल देखा होगा, ये एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है कि हमारे जो डॉक्टर्स के और जो इस फील्ड से जुड़े हुए, कोविड-19 से जुड़े हुए जो लोग हैं, सबके प्रिडिक्शन मैम यहाँ पर फेल हुए हैं। मतलब हम सुनते चले आ रहे हैं इवन फरवरी से कि नेक्स्ट 15 डेज में ये हो जाएगा, नेक्स्ट 15 डेज में ये हो जाएगा, लेकिन सबके प्रिडिक्शन गलत हुए हैं यहाँ पर। तो हमें कुछ भी है, बस हमें इम्यूनिटी के ऊपर अपना ध्यान देना है। उनके हमारी लाइफ जो आर्टिफिशियल हो गई थी उसको हमें नेचर की तरफ लाना है, नेचुरल की तरफ लाना है। और लाखों साल से जो हमारे एक्सपीरियंस हमारी बॉडी को मिले हैं, उस एक्सपीरियंस का यूज करके अगर हम अपने खाने पीने को ठीक करेंगे तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मैम आपने सुना होगा कि इसमें, इस बीमारी में एक खास बात है कि 80% लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि उनको ये बीमारी हुई थी और वो ठीक हो जा रहे हैं अपने आप ही। तो ये सिर्फ इम्यूनिटी बेस है। अच्छा, इसमें एक चीज और आ रही है मैम कि अभी जो प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर किसी वजह से हुई थी कि जिसमें लाखों लोगों को माइग्रेट करके जाना पड़ा दिल्ली से, बॉम्बे से, अपने अपने गांव की तरफ, अगर उनमें बीमारी का रेशियो देखा गया, नंबर ऑफ डेथ देखी गई, तो बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। जबकि कुछ जगहों पर नंबर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा है। तो ये डायरेक्ट लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, दिन भर उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, इस वजह से वो इस चीज को बहुत मतलब
बहुत इस बात के ऊपर एनर्जी खर्च हुई कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये रूल्स फॉलो करना है, लेकिन किसी वजह से वो लोग बेचारे नहीं कर पाए, लाखों लाखों एक एक जगह इकट्ठे हुए, लेकिन उन लोगों को इस बीमारी ने कुछ नहीं किया। वहां पर हमारा जो प्रेडिक्शन फेल हुआ, तो उसका रिजल्ट यही निकला कि इन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, इस वजह से ये लोग इसके अंदर सरवाइव कर गए। अब मैम अगर हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फूड हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करेंगे और कौन से ऐसे फूड हैं जो इम्यूनिटी को लो कर सकते हैं, तो मैम ये नेचर सोर्स के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं, अगर कोई एक चीज है आपको एक जगह नुकसान दे रही है तो वो 10 जगह फायदा भी देती है। तो मौसमी फल जो होते हैं वो जरूर खाना चाहिए, मौसमी सब्जियां जरूर खाना चाहिए, वो इकोनॉमिक होती हैं, सस्ती होती हैं और बॉडी में बहुत अच्छे से इफेक्ट करती हैं। जो भी आपके जहन में नाम आता चला जाए, जितने भी आपने आज तक बचपन से फलों के और सब्जियों के नाम सुने हैं, लेते चले जाइए, लेते चले जाइए, हर कोई इम्यूनिटी बूस्टर है। आलू, गोभी, बैगन, टमाटर, गाजर, मूली, प्याज, भिंडी, लौकी, जो भी आप लेते चले जाइए, हर कोई इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। बस आपको देखना यह है कि आपकी बॉडी टाइप उस तरीके का हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी उस तरीके की हो कि वो जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं उस रिजल्ट को अच्छे तरीके से वो दे। अब मैम मैंने इसके एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो किसी भी फ्रूट को ले लिया जाए तो अपने आप में वो कमाल का है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए मैम सिर्फ दो यहाँ पर लिए हैं, एक खीरा लिया है और एक गार्लिक को लिया है। आपके सामने मैम स्लाइड खुली हुई है कुकम्बर की। अगर आप कहीं डॉक्टर्स को दिखाने के लिए कभी भी जाते हैं तो डॉक्टर ने अक्सर, अगर हल्की सी आपसे बातचीत हो जाती है, तो वो जो भी आपके सामने नाम लेता है वो नाम को इसके अंदर आपको मिलेगा। इसके रेफरेंस स्लाइड के लास्ट में दे रखी हैं। विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, आयरन चाहिए, फैट चाहिए, कॉपर चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए आपको खीरे के अंदर मिलेगा। वो केमिकल कंपोजिशन जो बताए जाते हैं कि ये केमिकल कंपोजिशन इस डिजीज में वर्क करेगा, ये इसमें वर्क करेगा, वो सारे कंपोजिशन आपको इस खीरे के अंदर मिलेंगे। ये स्लाइड आपके सामने है। अगर हम इसकी, ये तो मैंने खीरे में एविडेंस बेस्ड बात की, अब अगर मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बात करूं तो खीरा एक ऐसी ग़िज़ा है, एक ऐसी डाइट है कि इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से, कैफिक एसिड की वजह से ये वाटर रिटेंशन करा देता है बॉडी में। ये सेल को इस तरीके से प्रिपेयर करा देता है कि सेल आपके अंदर, सेल में डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता। डिहाइड्रेशन ना होने की वजह से और वाटर रिटेंशन की वजह से बॉडी बहुत सी बीमारियों से बची रहती है। खीरे की एक्टिविटीज में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एनाल्जेसिक, एंटी अल्सरोजेनिक, एंटी हाइपोग्लाइकेमिक, जो आपको क्वालिटी चाहिए आपको खीरे के अंदर मिलेगी। बस ये है कि आपको उसका यूज करना है। अब ये मैम एविडेंस बेस्ड थी। अब मैं अगर एक्सपीरियंस बेस आपको बताऊं तो एक्सपीरियंस बेस में अगर खीरा आप खाते हैं तो इतनी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं कि एक नॉर्मल, अक्सर यूरिन प्रॉब्लम जो मैम हमारी इंडिया की एक प्रॉब्लम बहुत से लोगों की ये है, हम आप लोग को छोड़ के कुछ एक जनरेशन इस तरीके की है कि वो बेचारे 3-3, 4-4 साल खांसते रहते हैं, दिखाने नहीं जा पाते हैं, कुछ जाते नहीं है, कुछ दिखाने जा नहीं पाते हैं। तो अगर वो इन फूड्स का अच्छे से, जैसे मैं खीरे की बात कर रहा हूँ, तो जैसे यूरिन प्रॉब्लम अक्सर ऐसा होता है, लोग दिखाने नहीं जाते हैं शुरुआत में, कई कई साल तक उस प्रॉब्लम को रखे रहते हैं। तो अगर हम खीरे का रेगुलर यूज करें, और खीरे की एक अफ्रीकी किस्म है, एक अफ्रीकी जाति है जिसे बालम खीरा बोलते हैं, अगर हम खीरे का यूज करें तो खीरा यूरिन प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप रेगुलर खीरे को खाते हैं तो वो एक फूड की तरह वर्क करता है, लेकिन उसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट वाटर का होता है, तो वो आपकी बॉडी को फूड देता भी नहीं है और फूड की तरह वर्क भी कर जाता है। तो आपका हंगर स्टेशन डाउन हो जाता है, यानी आपको भूख नहीं लगती है, बॉडी में कुछ गया भी नहीं और आपने खाना खा भी लिया। तो इस वजह से आपकी ओबेसिटी ठीक होती है, फैट लॉस हो जाता है, ज्वाइंटिस को ठीक करता है, स्टोन को ठीक करता है, वोमिटिंग रोकता है। अगर आप इसे पीस कर लगाते हैं तो आपकी आंखों की बीमारियों में फायदा देता है। जीरे के साथ मिलाकर इसको खाएंगे। ये सब मैम एक्सपीरियंस बेस्ड है और लाखों से ये चीज कभी, लाखों सालों से ये चीज गलत नहीं हुई कभी।
अगर आप इसको जीरे के साथ मिलाकर खाएंगे तो गले की बीमारियों में फायदा देता है। दही के साथ यूज करेंगे तो इसकी अगर रेगुलर यूज करेंगे तो अगर पथरी है वो निकल जाएगी। पीस कर अगर इसी किसी घाव के साथ लगा देते हैं तो आपका घाव भर जाता है। अगर आप नींद नहीं आती है, रेगुलर आप खीरा यूज करिए, देखिए आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। और आजकल का जो सबसे हॉट टॉपिक कोविड-19, इसमें एक चीज आ रही है कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चल रहा है और वो ठीक हो जा रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों है? तो आप इस खीरे को डेली आप रायते के साथ इस्तेमाल करिए। यानी कुछ लोगों को खीरा हल्का सा नुकसान ये देता है, सकता है उनकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप इसे दही के साथ या मट्ठे के साथ यूज करेंगे, यानी खीरा खाइए, रायते के साथ बना के चाहिए खाइए, या खीरा खाइए ऊपर से आप मट्ठा पी लीजिए, तो गारंटेड ये जो फ्लू को ठीक करता है। और अगर इसमें कोई भी फ्लू का कोई भी वायरस, जैसे कि कोविड-19 जो है ये फ्लू का ये वायरस है, एक टाइप का फ्लू ही है, अगर आप इसको रेगुलर यूज अपने खाने के साथ करेंगे, आजकल तो सस्ता भी बहुत है, तो यकीन मानिए आपको कोरोना होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब हुआ, कब होके ठीक हो गया, कब बॉडी के अंदर उसकी इम्यूनिटी बन गई। तुरंत देखिए, सादा सा मिलने वाला जो नॉर्मली हर जगह अवेलेबल होता है, आजकल बहुत आसानी से मिल भी जा रहा है, तो उसकी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। मतलब अगर आप उसकी फार्मिकोलॉजी देखिएगा तो आपको जो चीज चाहिए, आप मेडिकल की दुकान पे खड़े होइए, उसमें किसी भी दवा पे आप नजर डालिए, उसका कंपोजिशन देखिए, फिर उसके बाद आके आप खीरे का कंपोजिशन देखेंगे तो उसके अंदर वो चीज मिलेगी। बस आपको जरूरत है उसे अच्छे से इस्तेमाल करने की। मैम ये थी खीरे की प्रॉपर्टीज। इसके साथ मैंने मैम दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है वो है गार्लिक। ये भी एक गार्लिक यानी कि लहसुन, ये भी एक ऐसी चीज है जो आपके किचन में लगभग लगभग 99% किचन में आजकल मिलता है, हर जगह यूज होता है। एशिया में तो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, वैसे पूरी दुनिया में ही यूज किया जाता है, जहाँ अवेलेबल नहीं है वहां पर एशिया से ही जाता है। इसकी भी एक खास बात यह है मैम, ये जो हमारी मॉडर्न पैथी है ये अभी कुछ शताब्दियों की है, और हमारी जो नेचुरल पैथी है वो लाखों साल की है। तो पहले जब हार्ट अटैक पड़ता था तब इसमें लहसुन का ही इस्तेमाल करते थे। यानी कि अगर आप लहसुन का यूज करेंगे तब आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। इसकी भी अगर देखिए, अगर जो मैंने सामने चार्ट खोला हुआ है तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स खुले हुए हैं, इसमें भी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सोडियम, जिंक, सेलेनियम, सल्फर, जितनी चीजें आपको नॉर्मली डेली रूटीन में डेली यूज के लिए चाहिए वो इसके अंदर मिलती हैं। बस इसे खाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि अगर आप इसे खाने के साथ काट के खाते हैं, अगर आप इसको गर्म करते हैं तो अक्सर इसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। अगर इसे काट के खाते हैं, चबा के खाते हैं, तो बस इसका खाने का मेथड थोड़ा सा अलग अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है। और फिर मैम मैं एक्सपीरियंस बेस्ड इसके ऊपर आता हूँ, क्योंकि मैम ये मेरी लास्ट स्लाइड है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में आजकल 60 ईयर से ऊपर जो भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम होती है। अक्सर वो जब उनका ईसीजी होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनसे पूछता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ था, वो मना करते हैं कि नहीं हुआ था। लेकिन पता चला कि कभी उनको ईसीजी से और इको से पता चलता है कि 5 साल पहले या 2 साल पहले उन्हें हार्ट अटैक पड़ा होता है, उनको पता भी नहीं चलता। लहसुन की एक खास बात यह है कि आपका ब्लड पतला करता है, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा करता है, तो हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब मैं इसका एक बहुत आसान सा इसकी एक नुस्खा बताता हूँ, हर कोई आराम से घर पे कर सकता है। बहुत से लोग हैं, अगर उन्हें लहसुन का एक जवा पतला सा अगर खाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है टेस्ट की वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आप एक लहसुन का जवा लीजिए, उसको थोड़ा सा कुचलिए, उसको आप शहद में मिलाइए और डेली 1 चम्मच आप खाइए। पहले मैम जब हार्ट अटैक पड़ता था तो लहसुन को कुचल के जबान के नीचे रख देते थे, आज उसकी जगह एक सार्बिट्रेट नामक गोली ने ले ली है। अगर आप डेली सुबह शहद में एक लहसुन का जवा मिला के आप खाते हैं तो यकीन मानिए और आप रेगुलर चेकअप कराएंगे तो यकीन मानिए हल्के 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 करके आपकी जो हार्ट से रिलेटेड जो दवाएं थी वो कम होती चली जाएंगी। और आप लोग इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिन लोगों को उलझन रहती है, प्रॉब्लम होती है, अक्सर शिकायत करते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है, या सोने लेटे हैं तो नींद नहीं आ रही है, या कभी कभी लेफ्ट हैंड में दर्द होता है,
कभी चेस्ट पेन कभी कभी उठता है, वो लोग ट्राई करें, बस करना कुछ नहीं है, एक लहसुन का जवा लें, अगर ऐसे ही चबा सके तो ठीक है, वरना उसे शहद में मिला के सुबह को सिर्फ 3 दिन खाइए। 3 दिन खाने के बाद आप उसके इफेक्ट देखिएगा। एक इफेक्ट तो इसका डायरेक्ट है, जो आपको हार्ट डिजीज के जो आपको सिम्टम आ रहे होते हैं उनको डिप्रेस करता है, और इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा कि छोटी मोटी बीमारियां आपको पता ही नहीं चलेंगी। मतलब ये इतना अच्छा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर 3 लोग हैं और वो सुबह को टहलते हैं या साथ साथ रहते हैं, उनमें से अगर एक खाता है लहसुन को शहद के साथ सुबह में, तो 1 महीने के बाद उसके अंदर और जो उसके साथ 2 लोग रहते हैं उनके डिफरेंसेस साफ देखने को मिल जाते हैं। रेगुलर इस्तेमाल से हमारा जो किचन है इनकी चीज़ों से हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने 1-2 चीज़ें बताई हैं, इसकी इतनी लंबी लिस्ट है, अगर इस पे बोलना में हम शुरू करें तो शायद पूरा साल भी कम पड़ जाएगा। तो जितना बहुत जो आपने मुझे टाइम दिया था इसके लिए बहुत बहुत मैम थैंक यू, शुक्रिया। कम टाइम में जितना हो सका, तो प्रोफेसर सर का शुक्रिया, सेठ सर का शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है डाइट से रिलेटेड किसी रिलेटेड, तो उससे ईमेल करके वो पता कर सकता है, पूछ सकता है। थैंक यू मैम। Thank you very much, Dr. Alim Hussain, for a wonderful talk on sustainable utilization of plant resources to boost your immune system. He started his talk by saying an immune response goes through a number of stages. It begins by recognizing that there is a threat from an infection. The response is controlled and directed by a number of checkup mechanism that optimize the system in parallel with the effective mechanism that target it, limit it, and damage and destroy the threat. Then he come back to the immune system, that is the symptoms of a weak as well as strong immune system. If you have a low immune system, and then what is the cause for having a low immunity, and what all the kind of food one should have to improve the immunity, as well as he advised to have food according to the weather condition and based on the region where you stay. And of course, he talked about you have a good immune system, we should have a proper sleep and proper balanced diet depends upon the weather, and also change our lifestyle. And there are many poisons he mentioned, which we found usually in the kitchen. We call it as a white poison. He mentioned 5 of the 5 white poison. And he also explained about the nutritional value of the vegetables as well as the fruit, asked us to have all vegetables and all fruits available according to the seasons, and especially with respect to, he explained with respect to garlic as well as the kira, which he talked more of a medical advisor than as a chemist. Thank you very much, Dr. Alim Hussain, for spending time with us and giving a lots of information, especially at this time of COVID pandemic, where people are afraid whether to survive, whether they'll survive or not. But again, he said, with the improved immunity and come out of the fear, you will be able to survive. Okay, thank you once again. Let me introduce our next resource person. For that purpose, I call upon Dr. Padma Malika Hasara, co-convener of this international webinar, to introduce. Good afternoon, ma'am. Can you hear me? Yes. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon to Principal Sir and all my co-conveners of this event. I now present Dr. Arshi Naqvi. She is an associate professor of organic chemistry at the Department of Chemistry, Taiba University, Al Madina, Al Munawwara, Kingdom of Saudi Arabia. Dr. Naqvi is a St. Johnian, as our principal sir has already said. She is a doctorate, a master's and bachelor's from our college, and she has done her postdoctorate
from CSIR, Central Drug Research Institute, Lucknow. She has many research interests, they being synthesis of heterocyclic and non-heterocyclic systems. She has also worked on in vitro biological assays with specialization in prostate cancer and breast cancer, and having worked on many cell lines such as MDA, MB, MCF7, PC3, etc. Dr. Naqvi has also isolated markers from natural products. From 2012 to 2015, she had a 3-year project funded by the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, for a postdoctoral research work in India. Dr. Naqvi has won many awards in India and abroad. Dr. Naqvi is a life member of many professional bodies such as the Indian Council of Chemists, the American Chemical Society, the Royal Chemical Society. And apart from that, Dr. Naqvi is an Indian and she's married to Dr. Alim Hussain. Thank you. Thank you. I would now call upon Dr. Naqvi. Thank you so much for that lovely introduction. I really appreciate, and I am indebted to you in that case. Very good afternoon to all of you. I would like to thank, of course, because Dr. Seth is here, he is my, you can say, godfather, and he has always guided me throughout every, you can say, ups and downs throughout the research work, whether it is my professional career or whether it's my personal things. And of course, I would like to thank, you can say, the chemistry department for giving me this opportunity. And of course, the principal, sir, Singh sir, thank you very much for giving me this opportunity, and nice introduction, Hajra ma'am. So let me start with sharing my screen. So we are today in series number 5, and for this international webinar. And my topic of discussion for today is computational methods and tools for sustainable drug design, screening, and development. So in this whole process, we will be discussing, some of the outlines are given here, that what exactly are drugs, then what is the basic drug discovery process. Then of course, we will be discussing, because this conference is about sustainability, so we will be discussing that what exactly is computational sustainability. And of course, my main topic, which is CAD, computer-aided drug design or discovery. And then in the end, or in the last, we'll be discussing some of the computational methods and tools which we can utilize for this same purpose. Now, the first thing which I would like to introduce in general, that what are drugs? If I speak out in layman language, we can say that drug is any substance apart from your food, which can bring changes in our body as well as in our mind functioning. Now, sometimes, and when I was a student, the same question came into my mind, that what is the difference between drugs and medicines? So this is specifically for the students to understand the basic difference, that yes, there is a difference between a drug and a medicine. Now, if we goes on to the definition of the drugs, drug broadly is any substance which can act on our body, and it is used for the prevention, diagnosis, and of course, treatment of diseases. Now, if we come over to medicines, now, drug was a broad category, but medicine, they are, you can say, very specific, and they are target oriented. Drugs, they don't have any, you can say, specific amount, a specific dosage. But medicines, yes, they have a specific dosage. For example, 500 milligram paracetamol, or you can say 1000 milligram of any antibiotic. So medicines, they have a particular dosage. Then potency. Of course, if it is a drug, then it is a potent candidate, not the exact molecule or not the exact medicine which we are looking. But yes, it is a potent candidate. But when we talk about medicines, these are already, they have all passed
the hindrance of all the drug discovery and development processes. And these are the administrated forms of the drugs. Then if we compare that drugs, all drugs, they are not medicines. For example, if we talk about, let's say, because the speaker before me talked about natural products, so let's say garlic. So yes, as we consume garlic as a whole, but medicine specifically is a specific compound, it is a specific molecule, and it is administered. But when we say medicine, that means all drugs, they are not medicines, but all medicines, they are drugs. Now, for example, if we can say drugs, ranitidine, paracetamol, or if we can say nigella seeds, nigella sativa, or we go for, you can say garlic or onion or any other specific thing. But medicine is in a particular sense, for example, Napa, which is a form of a paracetamol, and its dosage is already decided 500 milligram. Then neocorporin R, which is itself is a sort of a ranitidine, but the dosage is fixed, which is 150 milligram per tablet. Now let's discuss the sources of the drugs. There are basically three types of, or you can say three sources of drugs. First one, natural sources. Then we have semi-synthetic, and of course, the final one, which is of our importance of being a chemist, these are the synthetic sources. So let's just go through that what are natural, synthetic, and naturally derived. I have taken the same example of vitamin C to just differentiate that what exactly is the difference between natural, semi-synthetic, and synthetic. For example, vitamin C is naturally available in orange, in any citrus fruit. When we say semi-synthetic, that means, for example, alcohol. Produce it naturally by fermenting any fruit. For example, by grapes, by, you can say, that's particular thing, brain. Then alcohol can be semi-synthetic as well. For example, we can produce alcohol by controlled fermentation. That means we don't allow it to go as such naturally as it is. No, semi-synthetic is the one which is, that means it has to be controlled by somebody. And of course, in the last, synthetic is, that's what all we do in the laboratories, that we can prepare, we can synthesize, if I use a specific word, we can synthesize alcohol from ethane and steam. Same case with vitamin C, ascorbic acid. We can synthesize it in our laboratory from glucose. So let's first go to the natural products. That for natural, you can say drugs or medicines, there are a number of things which we can explore. For example, we can take it from animal sources, we can take it from marine world, we can take it from even venoms of snakes, you can say capricorns. They all are, you can say, sources of drugs. Then we can take it from plants kingdom as well as microbial world. For example, if you know penicillin, it was obtained from the bacteria. Now, let's go over to synthetic. So presently, majority of the drugs which we are utilizing, they are obtained synthetically. They have been synthesized in big pharma industries. Some of the drugs which are earlier obtained from the plants, they are today synthesized in the laboratory. For example, let's say curcumin. You can say, let's take curcuminoids. These curcumin, or if I say curcuminoids, they are obtained from the plant, for example, curcuma longa. So obtaining, extracting the things from the plants is really itself is a tedious task, but it's like, it's easier way to obtain them is in the laboratory, that we can synthesize them in the laboratory, and that too on the large scale. Some advantages of synthetic processes are, you can control the quality, the process is easier and cheaper, it is more potent and safer, and of course, we can go for large scale production. Then we come on to the semi-synthetic one.
That means we can manipulate the molecules, we can play with the things obtained from natural resources, whether it is from plant or whether it is, just like, for example, penicillin. Penicillin now has penicillin R, penicillin V, different forms of penicillin are available. But the original one was extracted from a, you can say, a mycobacterium. So these are mainly obtained by changing the chemical structure of the natural product obtained. Example, atropine bromide. Same case as I already discussed, that penicillin substrates, we can just simply play with the alkyl group, with the alkyl chain, and here we are with a new semi-synthetic product. Then those were the introduction of the drugs, difference between drugs and medicines, what type of sources we can have. Now let's move on towards to drug discovery process. Now, drug discovery process itself is a huge business. It's a huge setup, basically. Now, the question is that from so many candidates, how I'm going to select that which one is the particular one or which one is a potent candidate. So I have to choose between them. So drug discovery is finding a lead. Lead compound is a structure which has already shown pharmacological activities and can act as the starting point for drug designing. So when a pharmaceutical company or university or even us as a research group, we initiate medicinal chemistry project, then first we have to identify the lead compound. This is the first task in the drug discovery process, to finding out the lead compound. Now the question is how we should target, or what should be the strategy of this drug discovery program. So there are basically three ways in which we can go forward. First one is choosing a disease, because it's not an easy task. For example, if we get a single molecule and we can use it against, you can say, cancer, and that too in cancer is specifically for, you can say, breast cancer or prostate cancer or colon cancer or any other sort of cancer. So first thing is either we choose a disease, that we have to be specific in targeting a disease. For example, if I select cancer, in cancer also I have to be very specific, as if it's like, for example, prostate cancer. Even in prostate cancer, I have to select whether it is estrogen receptor alpha or beta. So we have to be first selecting the disease, that this particular disease which we are targeting for the drug discovery program. The second way of, you can say, going into this process is choosing a drug target. That, for example, I select a particular drug. For example, let's say isoniazid. Isoniazid is utilized, it is a marketed drug, and it is utilized in the treatment of tuberculosis. So we can target this particular drug, that, okay, we are going to play with the structure of isoniazid. So now when we see the structure of isoniazid, there are a lot of things which we can synthetically play into it, that we can change the pyridine ring, we can do alkylation, we can increase the chain. So another method of drug discovery program is, first we can either choose the disease or we can choose a drug target. Then the third way of going for a drug discovery program is finding a lead compound. For example, let's say paracetamol, let's say any other, rifampicin, ethambutol, or any other particular thing, that this is a compound which is used for treatment of a particular disease. So this can be our lead compound, and we are not going to the laboratory to synthesize it. But what we can do is we can play with the structure using computational tools to find out that maybe this compound, if we play with the different structures computationally, because
Doing it in the laboratory is really a tedious task. Sometimes we don't get the desired product. But if we do it computationally, we can do huge amount of libraries rather than synthesizing 1 or 2 compounds. So 3 methods: either choose the disease, or choose a drug target, or find a lead compound through computer-aided designing or structuring the structural basis. This is the whole slide for drug discovery process, that these are the different steps through which a drug has to pass through in order to come into the market. First thing is target selection. Of course, it can be cellular or genetic targets. We have to consider the genomics, proteomics, and of course, bioinformatics. Then we go into synthesis, if we are synthesizing it chemically, or we have to go for isolation, if we are isolating it from extract or any other organism. Then we can go for combinatorial chemistry, assay development, and of course, high throughput screening. These all methods lead to drug discovery. Then medicinal chemistry, here we go for library development of those particular drug candidates. Still, they are the candidates. They are not into the market. They are not being tested yet, neither in vitro, not in vivo. Now here the step is that we go for in silico studies. This is a new concept. I will discuss it later on my slides. Then we go for chemical synthesis as well. Now, after synthesizing a molecule, after purification, after you can say characterization, of course, because characterization, IR, NMR, or these spectral data is really important in order to characterize a particular compound. So after having all this data, then we go for in vitro studies to find out that whether this compound can be a good, you can say, drug in future or not. So in vitro studies, generally we do, you can say, we can check on particular cell lines. As Dr. Hajra has mentioned, that I worked with various cell assays, for example, for prostate cancer, PC3 cell lines. I worked with breast cancer, for example, MCF7, MDA, MD cell lines. So this, when we work or when we test our compounds on particular cell lines, we call it as in vitro, where we check that what exactly, whether it can be a candidate, or what exactly is the mechanism of the action of that particular drug candidate. It still is a candidate. Then when it passes the in vitro studies, then we go for in vivo studies. In vivo studies are basically when we do the experiments on animals. For example, hamsters, for example, monkeys. So various animal models of different diseases are available. We do their behavioral study, functional imaging, and experimental vivo studies. And then in the last, when a drug candidate passes all these hurdles, then in the last, if it comes out to be a really good candidate, then we go for the clinical trials. And these are the human clinical trials with different phases. After passing through these clinical trials, then we got a single compound as a drug, which was earlier a drug candidate. So drug discovery process itself is a huge and tedious task. So as you can see the slide, that from 10,000 to 20,000 candidate drugs, these, just like it's a simple process. For example, if we are recruiting for any post, for example, for my assistant, I just apply for the post. There are a number of forms and the CVs which I receive, and then I have to sort it out. The same thing is here, that out of 10,000 or 20,000 drug candidates, the first step is discovery and screening, which we can go through with high throughput screening and of course target validation. Then second step is lead optimization. Third step is admit studies, which we will be discussing what exactly it is. Then when it passes all these hurdles, then it goes into clinical trials. And the step 5 is that even if it passes the clinical trial, it has to be approved by NDA. Because though there are a number of drugs, for example, just like hydroxychloroquine,
though it is a drug and it has passed clinical trials, but in some cases it is restricted. In some countries it is restricted. We cannot utilize it. So it has to be NDA approved, as well as it's like it should be proven, it should be given a task to be given into a particular patient. After all this tedious task, we get one drug into the market out of 10,000 or 20,000 drug candidates. So drug discovery is basically finding a lead. This is the things which I've already explained, as you can see in the slide. First, you have to identify a lead compound. We can screen a library of compounds. Then we can take it from published literature, reviews, research papers, articles. Then we can go for natural products, of course, and then we can go for structure-based designing as well. Now we have to optimize to give a proof of concept that will show that efficacy of that particular model. Then we have to optimize various drug-like properties, pharmacokinetics, physicochemical, pharmacodynamics, metabolism of target identification. After all this, we have to develop the assay methods. First, we go for in vitro studies, enzyme assays, cell lines. Then we go for in vivo studies, that means animal models or pharmacodynamic assays. And bang, here we are in the last with the safety assessment and of course, preclinical candidates. Now let's talk about what is computational sustainability. In general terms, when we say computational sustainability, that means it is utilization of the computational tools, computers, computational techniques to enhance our sustainability. For example, I take compound A, I take compound B, I mix them together, I do a reaction in my laboratory to get a compound, hypothetical compound C. But I'm not sure whether I will get compound C completely or not. Maybe I can get a side product with it. And sometimes it's not an easy task to isolate or separate that particular side product. Even sometimes we don't get the exact compound, synthetic compound, which we are expecting. So this increases our task because we have to waste a lot of chemicals, we have to waste our energy, money, time, everything on that particular synthesis. And that too, it's not compatible with the environment. So just going blindly for any synthetic compound or for synthesizing any particular thing, what we can do as a human being, as a person who is concerned about environment, what we can do is rather than synthesizing a whole lot of compounds in our laboratory and ending up with nothing, because sincerely it happens that you synthesize, you get a compound, really perfect compound, 95% yield, you do characterization, you go in vitro, very good activities, in vivo, very good activities, but they fail in clinical trial. So the whole lot of process is wasted. So rather than wasting the time, energy, money, creating pollution, wasting economy, wasting time, what we can do is for the sustainability of our environment, that first we have to target and then we can do whatever modifications we can want, and we can do it through computational tools. Computational tools, they are not always 100% effective, but yes, they are effective and they let us know that, okay, this compound does not matches with the criteria, so this is out. So no need of synthesizing. So out of so many compounds, we come onto particular thing. And this is what we say computational sustainability, that we are enhancing our sustainability by utilizing computational tools. This can be, you can say, done by machine learning, big data, data visualization. This will not only save economy, save time, it will save our environment as well. So the whole lot of process is that we synthesize, then it go in vitro studies, then it goes for lead optimization, then receptor-based designing, and in the end, these processes, they all are interlinked together. This all can lead to a drug candidate. So rather than blindly going into the laboratory, mixing A and B, synthesizing a particular compounds, it's better to screen the compound first, that
Does it have that potential which we are looking for? It doesn't have. So we can do it by computational tools, by receptor-based designing, by virtual screening, or by lead designing or lead optimization. Once we get into it, then we can synthesize it. And of course, after synthesis, we can go for biological evaluations. So as you can see here in the slide, that out of, if we go for random screening of particular compounds, we have to screen 1,000, 1,300, 2,000 compounds. And out of those compounds, we just get few really active. But when we do virtual screening, even of 100 compounds or 200 compounds in those particular screenings, that emerged with at least 2, 3, or 4 really potent and active compounds. So now what CAD is? This is a term which in general we call it as virtual screenings, computer-aided drug designing, computer-aided drug development. We also call it as in silico, just like in vitro and in vivo. So computer-aided drug designing is virtual screening, that you are screening it virtually, not into the laboratory. You are just hypothesizing it, you're just checking it with the particular models available. So computational techniques, they have really turned a crucial role in many drug development, you can say processes, drug development programs. Various techniques, for example, ligand or structure-based virtual screenings or approaches have been identified, and they are proved really their efforts. Then it's like virtual screenings, they avoid the problem of broad searches of chemicals, restricting to a specific compounds, avoid, of course, restricted the search of compounds. Enough biological data have been previously made. Computer-aided drug designing is really, you can say, helping for us. So what we can do is there are some computational tools, there are some strategies, some steps, some approach that we have to follow to get into this process. The first thing which we generally consider in virtual screening is drug likeness. That first we find out whether our compound can be like a drug or not. So for this, there is a rule, we call it as Lipinski's rule of 5. This is a rule of drug likeness, that whether you can compare your compound with a drug or not. Now, what they have done is that when you put your drug candidate, when you throw your drug candidate in that particular software, what they have done is they have made a database which matches with the structure of the compound, and it categorizes the compounds into, you can say, it categorizes the compound into drugs and non-drugs on the basis of those particular criteria. So the first criteria here for drug likeness is Lipinski's rule of 5. Lipinski's rule of 5 says that for a compound or for a molecule to be a drug candidate, it should not have molecular weight more than 500. The log P, lipophilicity, should be less than 5. Hydrogen bond acceptors, donors should be less than 5. Rotatable bonds should be less than 10, and polar surface area should be less than 140 angstroms. This is a general Lipinski's rule of 5, that if your compound or if you designed compound follow these steps, then of course it can be a drug candidate with drug likeness. Now these are basically sieves that we are filtering the compounds through the particular sieves. So these filters, these are applied for drug likeness. Now, along with Lipinski's rule of 5, there are various other rules. For example, Egan, Weber, Muge. These are also different rules which we have to consider in our mind. Now, thing is that it's not always like if a compound fails here, it cannot be a drug candidate. No, this is just a hypothetical studies. Why? Because we are trying to reduce the amount of compounds. So there are certain candidates. For example, if we go for polymers or if we go for proteins or macromolecules,
of course, their molecular weight will be more than 500. So it doesn't mean that they cannot be a drug candidate. Yes, they can be, but generally for a small molecules, a small molecule library, these rules need to be followed. So the first thing is drug likeness, which we generally see through Lipinski's rule of 5, Egan rule, Muge rule, Weber rule. Different rules are there. Then this is the term I was talking about, in silico. That means you are doing it inside the computers, utilizing the computer. Just like in vitro is you're working on cell lines. In vivo, you are working on animals. In silico is you are working on the softwares. In silico is an expression which is used to perform on computer or via computer simulations. So there can be number of terms we can use for the same. In silico studies, in silico screenings, virtual screenings, then computer-aided drug designing. So in silico studies are the studies which we use, which we do by utilizing computer simulations, computer softwares. This is all predictions, drug likeness. Then we go for ADMET studies, bioactivity, molecular docking, high throughput screenings. Then drug-like properties. Specifically when we talk about the drug-like properties, as I said, these are ADMET: absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity. Even bioavailability. These, we don't have to go for drug dissolution studies or phase solubility studies into the laboratory. We can simply put our compound and check out on these particular criterias. PK is pharmacokinetic studies. PD is pharmacodynamic studies. Pharmacodynamic study means what the drug does to your body. That what a drug, when you take it, what that drug can do to your body. And that is particular when we talk about toxicity. And the remaining ADME is, it comes under PK. That means pharmacokinetics. Pharmacokinetics means that what your body does to the drug. That means when you take a drug, what your body does. That is what we call pharmacokinetic. That means how the drug is absorbed in your body, absorption, how it is distributed, distribution, how it metabolizes your functions, and of course, excretion. So Lipinski's rule of 5 was for physicochemical parameters. Pharmacokinetic parameters means what the body does to the drug: absorption, distribution, metabolism, and excretion. Then we have pharmacodynamics. That means what can drugs do to your body? And that is what we call toxicity. So ADMET, these are pharmacodynamic, pharmacokinetic studies, both of them combined together. Absorption, distribution, metabolism, excretion. These are pharmacokinetics. Toxicity is pharmacodynamics. Then the third thing which we can discuss in computational tools is, of course, molecular docking, molecular simulations. These are the really one, they are, you can say, the stars in the present age, molecular docking, because most of the people throughout the researchers, they have been utilizing this computational tool for the drug discovery program. Now, in generally, when I speak docking, docking basically means I take a protein and I have a target. I have my compound and I target my compound on a particular thing. Just like we have studied a concept of, for example, catalysts, enzymes. They work on a phenomena which we, in layman, we call it as lock and key. That for every lock, we have a particular key. And for every lock, we cannot use every key. So it has to be really specific. So docking is an attempt to match the best finding match between the molecules. If we go for a more serious definition, that was a layman basically. So docking is a method which predicts the preferred orientation of one ligand, that how it is bound with that particular complex, with that particular active site. So as you can see here, we have in green here on your screen, docking of small molecule ligand is in brown, and we have a protein receptor in green.
So basically it is like it's a lock and key process. So the protein can be thought of as a lock and the ligand can be thought as a key. So we can try out with one lock with different number of keys. So we can try out with one protein with number of drug candidates. So it's like we take a protein, then we select a particular binding site, because in a protein, because protein is made up of numerous amino acid residues, we have to select a particular binding site, whether from various softwares or from literature review. Then after selecting the particular, you can say binding site, we do docking with our ligand to check out that what exactly is the binding affinity of our particular compound. So this molecular docking can be done by 3 types. We can do protein ligand bonding. We can check molecular docking for protein ligand, for protein-protein, and of course, we can check it for protein nucleotide. So there are various methods in molecular docking as well. So molecular docking, if I speak in general, recently I have done with COVID-19. What we generally have to do is, let me tell you a freely available software, which is Autodoc 4. Autodoc 4 is utilized because it is freely available. It is utilized for doing docking studies to check the binding interactions of your particular compound. So you have to select a particular compound. For example, I selected COVID-19. And for COVID-19, I have to select a particular protein responsible for it. So in literature these days, there are 2 crystallographic structures going on, 2GTB and 6LU7. These crystal structures, PDB, protein data banks, these crystal structures, these are 3D crystal structures of proteins. This can be obtained from protein data banks. Specifically for COVID-19, I utilize 6LU7 and 2GTB. And in that, we predict the, you can say, active sites. And on that particular target, we check out with the particular drug candidates. For example, recently I checked with both hydroxychloroquine, chloroquine, and remdesivir. But it was really amazing to find out that hydroxychloroquine, even chloroquine, was not that efficient in binding into COVID-19. And these results are not just hypothetical. These results have been already published by researchers that hydroxychloroquine or chloroquine, these are not the particular medicines to be taken right now. But yes, remdesivir emerged really good in the binding study. This is my particular experience because I have recently done it, that if you get the binding energies in more negatives, that means your ligand is binding more onto the particular protein site, bonding that particular transcriptions and things going on inside the protein, thus blocking the particular, you can say, the things in the active sites which work on particular targets. So remdesivir, yes, it emerged to be a really good candidate. Favipiravir is a good candidate. Lonapiravir is a good candidate. So these are the results. If you go on these days, there is a flood of research papers on COVID-19. So number of research papers you can find out with molecular docking studies. So overall, it's like computational tools, they make our life easy. They make our environment sustainable. They help us go green. So it's like virtual screenings, they are cornerstone in silico drug discovery. They effectively allow the screening of the drug compounds to check out their feasibility, that whether they can be a candidate or not. That out of huge library of compounds, only few emerge to be as a drug candidate. Then it improves the likelihood of finding the interesting structures, systematic screenings, the possible design space before synthesizing. It saves money, it saves energy, because computational evaluation is much easier. What you can do is you simply design a structure,
You select a protein and you do docking. You don't even have to go to your laboratory to do the things. But yes, research on particular protein or particular targets has to be really good. Because 2 days back, I was doing antimicrobial studies with docking. And to my experience, it was, personal experience, it came out that when I selected a different active site, so the compounds were not good at all. They give me positive binding energy and it's not good. That means they are not binding to the site. But when I use different active sites with the same compounds, they were really amazing. The results were really good. So a little bit of research is required, how to select the protein, how to select the active sites. That's need to be a little bit of brushing. So computational evaluation, it is faster, less expensive than experimental testing. So high through output virtual screening, this will revolutionize the discovery and optimization of material methods. So these green and sustainable computational tools, these can be utilized. These can help us in medicinal chemistry a lot. These are some of the references, and I would like to thank the organizing committee, the chemistry department, our principal, sir, and for all the colleagues who have attended here. Thank you so much, and I would really appreciate if you have any questions. I'm ready to answer. Thank you so much. Okay, thank you, Dr. Arshi Naqvi, for giving a vivid description about your topic on computational methods for the drug discovery as well as for the drug delivery. Computational methods have a significant role to play in designing drugs, as you said, up to the delivery of drugs, as they are superior to the traditional method of drug designing. You spoke about difference between drug and a medicine. All drugs are medicine, but all medicines are not drug. Like, you made it a very simple explanation. I remember you were a very good debater and very good participant in all the competition. And you still retained. I'm very happy to see you in the same vibrant mode of expression, and I'm really happy to have you. And you all are my inspiration. And again, you spoke about the synthetic as well as the natural and semi-synthetic drugs and the discovery process and the sustainability, computational sustainability. Why do we go for computational techniques? Why not we go for the regular old methods and the advantages and drug development and the various virtual platforms you have explained, CAD technique, virtual screening, and role of rule of five, that is Lipinski rule. And you simply explained about the lock and key mechanism by which the drug and the molecule. And again, finally, you came down to the COVID-19, the most hot topic. Like in America, they were buying and from chloroquine and hydroxychloroquine, the anti-malarial drug from India, thinking that it would be a solution for the COVID-19 along with the azithromycin antibiotic. But again, what you said is really the remdesivir, which is an antiviral drug, is found to be effective, which is used to treat the Ebola virus, is found to be good since it is an antiviral drug. Thank you very much for giving a wide description and information. And I was watching in both, in Alim Hussein's speech also, people were appreciating him. Yeah. It was a very good interactive section and very good talk, and they want to hear more about you. And also in Arshi's talk also, the people were writing here. It was a very good section, and our own, many of the alumni now, they are in different parts of the world and different universities. They were also appreciating, I could see it. So thank you both of you for the wonderful speech. Now it's a question and answer time. So on behalf of the participants, the questions found in the chat box, I request our Honorable Dr. Rajiv John, Dr. Mohammed Anis, Dr. Ram Kumar Saraswat, Dr. David Danish Mercy to ask questions. Thank you, ma'am. Yes, sir. Dr. Anida Vigyan, yes, first Dr. Mohammed Anis, sir. Hello. Yes. Yes. Thank you, ma'am.
I think lectures are very nicely presented, very informative and easily understandable. A very small question has been asked by Saurabh Yadav Okay, sir. to Dr. Alim Jadi. Okay. He wants to know about the anti-allergic properties of the cucumber. Very well explained about the cucumber. Okay, now he knows about anti-allergic properties of. Please explain. Thank you, sir. Hello. Yes, yes. Yes, explain. सर ये एक्सपीरियंस बेस अगर इसकी एविडेंस देखिए तो मैं इसका मेल कर दूंगा इसका एविडेंस का एक तकरीबन 100 ग्राम्स कुकम्बर अगर आप लेते हैं तो उसमें एक्चुअली इन्होंने जो पैरासीटामोल लिखा है पैरासीटामोल जो है वो एनाल्जेसिक तो है 350 ml में 500 ml में वो मतलब स्वेलिंग को कम करती है। तो अगर आप 100 ग्राम कुकम्बर लेते हैं तो उसके अंदर 50 मिलीग्राम 50 mg डाइक्लोफेनेक कंटेंट होता है और ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। अगर आपको पेन हो रहा हो और आप वार्म वाटर के साथ अगर आप कुकम्बर यूज करते हैं तो आपका मतलब एक बहुत अच्छा एनालिसिस इफेक्ट है उसका। अब जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एनाल्जेसिक नहीं है, वो एंटीपायरेटिक है मगर एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है। Exactly. थैंक यू। और जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका एविडेंस जो है मैं मेल कर दूंगा, मेरे पास है। थैंक्स। All questions? Dr. David, I can see. Dr. Anida Vikanand, I can see. Dr. Rajivi John. Dr. Mahima, can ask questions. Dr. Anida Vikanand. I mean, even if it's like, if any question emerge or something, they can email me. I would really be happy to help them out. Exactly. To give them answers. No issue. Okay, thank you. Dr. Padma, any questions, any answer? Any question, Padma? Padma is also too much interested in this medicinal. Yeah, I was watching her throughout the, you can say, presentation. So if she has any So questions. I have one question. I have one question. Yes, please. I have one question. What has been your drug discovery in cancer? Because I have also worked on cancer cell lines, and I've worked on anti-HeLa and other cell lines also. I worked many years ago. Okay. So what is your drug discovery on cancer? Basically, it's like what we usually do is generally I go for prostate cancer and breast cancer. I work with PC3, LNCAP, then MCF7, MDA, MB, MCF7, of course. So it's like what we do is before going for any synthesis, we check it out. We play with different substituents on the particular structure. And we check out the binding affinity, we check out the bioactivity, we check out the drug likeness, we check out the we do a whole lot of, you can say, computational process for the particular thing. And believe me, till date, we have, I forgot to mention my papers here, we have really good paper with nanoparticles, with the natural extractions, then synthetic compounds, of course, that whenever we get the results, anti-tumor results in vitro, they are always seconded by computational studies. Okay. Whichever compound emerged to be really good binding, that emerged really good in vitro studies as well. This is still the experience of mine. So if you have anything, or you can say if you want particular structures, crystal structures, or to check out the docking studies, do let me know. Okay, thank you. Dr. Anis, Dr. Anida Vikanand, Dr. Padma, Dr. Praveen Tyagi, Dr. Ramkumar Saraswat, Dr. David, all are organic chemists. They all are interested in this field of medicine and synthetic. So you all can ask your own questions. There are so many questions in the chat box also. Your own questions also you can ask, because this is your field. You can ask more questions. There's one question, ma'am. Yes, David. What is the difference between QSAR and CADD, and how we identify when we use QSAR and CADD with drug?
This is a question for Arshi. Okay. QSAR, basically, it is a quantitative structure activity relationship. This is the full form of QSAR. That what we are doing with QSAR studies is we check out the compounds in QSAR studies because it is a sort of structural relationship that general, if I speak, we go for HOMO and LUMO studies, that what exactly is the simulations going on the particular structures. It is a quantitative relationship. But CAD, computer aided drug designing, it is like we take any drug candidate random and we can check its probability of being a drug candidate utilizing the different tools. This is the basic difference between QSAR and CAD. Thank you, Arshi. You're welcome. More questions are there? Yes, sir. Yes, please. मैम इसमें मैम एक इसमें पढ़ा हुआ है कि वेयर कैन वी गेट बालम खीरा। मैं इसके बारे में मैं बताऊं कि बालम खीरा जो होता है बिल्कुल एकदम अपना जैसा अपना खीरा होता है इसी की तरह से होता है। ये देखने में एकदम ऐसा ही होता है, लेकिन ये अफ्रीकन ओरिजिन है। ये अब यहाँ पर भी इसकी खेती होने लगी है और ये जो पंसारी होते हैं उनकी शॉप पे मिल जाता है, वो लोग इसे ड्राई फॉर्म में रखते हैं। अब जब इन्होंने पूछा है तो इनके बारे में एक बात बताता हूँ, जैसे कि जो मॉडर्न पैथी है उसके अंदर अगर रीनल स्टोन है आपके अंदर, तो जो एलोपैथ है उसके अंदर ये माना जाता है कि अगर आपका जो ऑक्जेलेट के क्रिस्टल बनते हैं, सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं जो किडनी के अंदर बनते हैं, उससे अगर आप प्रेशर कुकर में भी रख के गलाएं तब भी वो नहीं गल सकते। और यूरिथ्रा का साइज 2.5 से 3 mm तक होता है। लेकिन मैम मैं गारंटी लेता हूँ इस बालम खीरे की, अगर आप इस बालम खीरे का यूज करते हैं तो हफ्ते से 10 दिन तक अगर किसी के अंदर रीनल स्टोन है, अब मैम ये एक्सपीरियंस वैसे ये नहीं पता नहीं कैसे 8 से 10 mm तक का रीनल स्टोन आराम से इससे रिमूव हो जाता है। और ये मतलब इसे आप गारंटी के साथ एक तरीके से खा सकते हैं। अच्छा इस मेडिसिन में एक खास बात ये होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एनाल्जेसिक के फॉर्म में खीरे का इस्तेमाल किया और अगर बाई द वे वो वर्क नहीं किया तो वो बाकी पार्ट उसका डाइजेस्ट हो जाएगा, साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये बालम खीरा जो इन्होंने पूछा है तो इन्होंने रीनल स्टोन के ही लिए पूछा होगा, क्योंकि इसका रीनल स्टोन में बहुत अच्छा यूज है। और ये मतलब 8 से 10 दिन में अगर इसका यूज करें तो स्टोन रिमूव हो जाएगा। हेलो 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 हाँ यस यस सर। ये बालम खीरा की पहचान क्या है? आप कैसे पहचान सकते हैं बालम? जैसा नहीं, खीरे जितने भी हैं, देखिए खीरे जी आपने भी मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आपने कोई खीरा देखा होगा वो कड़वा होता है, कोई होता है नॉर्मली आप खा लेते हैं, लेकिन दोनों को आप पहचान नहीं। कुछ खीरे बहुत डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ जो है इसमें हाँ अलग अलग होते हैं, जेनेटिक कोडिंग के ऊपर विच वन इज द बालम खीरा? लेकिन बालम खीरा जो होता है ना, जैसा अपना ये वाला खीरा होता है नॉर्मली सेम वैसे ही देखने में होता है। लेकिन ये लोग जो पंसारी लोग जो इसको जब बेचते हैं तो थोड़ा सा काफी दिन हो जाते हैं तो ब्राउनिश हो जाता है। क्योंकि आपने बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ा दी बालम खीरा के लिए, इतना बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है हम लोग बालम खीरा यूज करना चाहिए हमें कोविड-19 के टाइम में। हाँ नहीं आप इसको लेकिन वो पहचानेंगे कैसे, लाएंगे कहाँ से, वो प्रॉब्लम है। ये तो पंसारी की शॉप होती है अपने आप। अच्छा देखिए जो मेरी स्लाइड्स, वो सब्जी वाला ग्रोसरी पर या वेजिटेबल्स? हाँ जी कहाँ मिलता है ग्रोसरी पर? नहीं, ये जो आपने देखा होगा कि आपके शहर में कुछ आयुर्वेद की शॉप्स होती हैं जो आयुर्वेद का सामान रखते हैं, जैसे वो गोंद रखते हैं, हल्दी, अगर आपको हल्दी मतलब हल्दी वगैरह अगर आपको साबुत फॉर्म में जहाँ चाहिए होती है वहाँ मिलती है, वहाँ ये लोग रखते हैं, नॉर्मली रखते हैं लोग। अच्छा ड्राई फॉर्म? हाँ ड्राई फॉर्म में मिलता है। अफ्रीकन one question is from Dr. Alok Kulsesta. He wants to know from, I think, from Arshi Naqvi. Yes, please. Why remdesivir is getting poor responses in some of the country, and he is saying that we at the Glenmark developing favipiravir for oral solid and trial, and will end in the month of the July. The question is, okay, that is the question. Let me answer this, Dr. Alok ji, that remdesivir, you are correct. It's like in COVID-19, the things we are going in dark. We are not, you can say, till date, because this COVID-19, you can say it is changing its forms.
the particular virus is, you can say, undergoing mutations. So there are a number of changes going on in the particular this COVID-19 virus. So we are just going blindly in for the treatments. So just like chloroquine, hydroxychloroquine, as you know that USA has already asked for import of that particular thing. But it's like what we did is that as the research is going on, researchers are coming up with new crystal structures of the particular COVID-19s. What I have done is I have taken two crystal structures for this COVID-19 from protein data banks, 6LU7 and 2GTB. And it's like when I check out on the particular sites which I came across, hydroxychloroquine or chloroquine, it's not working that particularly. But yes, remdesivir emerged as a good candidate, along with, yes, you are correct, that favipiravir, it is also emerged as a good candidate in my studies. And as I have already said that you can say the selection of the active sites, the particular protein is really an important task to do this computational tools. So it's like because COVID-19 virus is undergoing quick mutations. So we are, and in the present scenario, we are not in a condition to target a particular, it doesn't have a particular, you can say, structure or thing. So we are hypothetically trying it out. And yes, because you are working at Glenmark, you are working on you can say, oral solid and trial versions of favipiravir. In my studies, along with remdesivir, as I mentioned, favipiravir, ritonavir, and lopinavir, because these are already utilized as antiviral drugs, they have emerged as a really good candidate on the particular crystal structures of the COVID-19, which I have undertaken in my studies. Thank you. एक मिनट जरा थोड़ा सा मैं डॉक्टर आलिम से और अर्शी ने दोनों ने बहुत अच्छा बोला, हर स्टेप को बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया, इसमें तो खैर कोई शक ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर आलिम से एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि आपने एक जगह बताया है कि खीरा जो है रिटेंशन ऑफ वाटर करता है, तो रिटेंशन ऑफ वाटर होने की वजह से बीपी बढ़ तो नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल 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 बीपी कम नहीं जाता। एक्चुअली सर मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि बॉडी में आप जानते ही हैं कि ज्यादा से ज्यादा वाटर कंटेंट है। तो एक मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि पानी से इलाज, वाटर से। तो अक्सर बहुत सी ऐसी डिजीज होती हैं जिसके अंदर ये ब्लड प्रेशर भी आपकी आती है कि ये वाटर के ऊपर नीचे जाने से ही, वाटर का लेवल कम होने से, डिहाइड्रेशन से या वाटर लेवल ज्यादा होने की वजह से होती है। लेकिन आप एक बात जानिए, ये जो अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर डायरेक्ट ये बोल देगा, जैसे कि किसी को भी वीक देखा उसने डायरेक्ट लिख दिया आप विटामिन ई लीजिए। उनकी दवा में साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये नेचुरल जो होते हैं ना, जैसे आप अगर खीरा लेंगे, इसमें अगर आप लेते हैं ये आपकी बॉडी को फायदा ही देगा। अगर बाई दी वे ये फायदा नहीं देता है तो ये डाइजेस्ट होके निकल जाएगा, आपको ये बीपी में इसमें उसमें कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं करेगा। अच्छा, एक्सेस यूज तो हर चीज का देखिए नुकसानदेह होता है, कोई लगातार 2 साल तक खाता ही रहे उसी में लाइफ गुजारे तो नहीं, लेकिन इससे कोई लॉस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। कुकम्बर एंड कैफीन दोनों का, कैफीन जो है टी में है, चाहे हम लोग ज्यादा पी लेते हैं तो उससे भी रिटेंशन होता है या मतलब डायूरेटिक है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल। बात ये कि ये जो जैसे खीरा है ना, ये वाटर लेवल को ये बैलेंस करता है। अगर कम होगा तो बढ़ाएगा और जरूरत पड़ेगी तो सप्लाई करेगा, मतलब जरूरत पड़ेगी तो उसे एक्सेस फॉर्म में यूरिन के थ्रू निकाल देगा, क्योंकि ये कई सिस्टम पे एक साथ वर्क करता है। It is a buffer. बफर ये ज्यादातर चीजें जो है ना, ये फ्लोरा को मेंटेन करती हैं। जैसे मैम आप सुनती होंगी जैसे इसबगोल की भुस्सी खाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी वर्क करेगा, लूज मोशन में भी वर्क करेगा ना, दोनों में वो आपका इसको मतलब फ्लोरा मेंटेन कर देता है। और जैसे मैम ये आजकल जो एंटीवायरल दी जा रही हैं,
आप ये समझ लीजिए अभी तक किसी के पास भी कोविड-19 के लिए कोई दवा नहीं है, सब हिट एंड ट्रायल चल रहा है। बस अब आप वही मैंने पहले बात कहा था कि कोई दवा अगर लिखी जाती है तो उसमें डॉक्टर को फायदा हो जाएगा, मेडिकल कंपनीज को फायदा हो जाएगा, मेडिकल स्टोर को फायदा हो जाएगा, पेशेंट को हो या ना हो इसकी कोई या ना गारंटी नहीं। कुछ अभी तक कोविड-19 के 14 वो मिल चुके हैं ट्रेड। अमेरिका में अलग तरीके का है, यहाँ अलग तरीके का है। तो अभी बस हमारे पास एक ही चीज है कि कैसे ही करके हम अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखें बस। Exactly. वेरी इंफॉर्मेटिव। आप दोनों ने बहुत अच्छा दिया और हर स्टेप क्लियर करा है कि बहुत अच्छी तरीके से, और मैं दोनों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और अपना आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। वेरी। और जब कभी कोई टीचर से ज्यादा जानता है तो उस टीचर को बहुत खुशी होती है। डॉक्टर सूजन, डॉक्टर अर्शी, डॉक्टर नवर, डॉक्टर अजय तनेजा, ये सब जो है स्टूडेंट रहे लेकिन मुझसे कई गुना ज्यादा जानते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इनको सुनता हूँ। Sir, no people All is best above है। the teacher. No people is above the teacher. Teacher is always a teacher. People above the You teacher. are our ladder of success, sir. How can we beat you? You are our ladder. Okay. Any sir. Any other query, sir? Any other query from anyone? आपने बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो, और पूरा जो है सब स्टूडेंट्स को ही बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो आज पहली दफा मेरे ग्रैंडसन ने कहा कि बाबा मैं आपके लिए लगा देता हूँ, तो मैंने कहा भाई लगा दो, मेरे को बहुत जरूरी सुनना है। अर्शी का आज आएगा और आलिम भी बोलेंगे तो मैं सुनना चाह रहा हूँ। और कई दफा आपने भी मेरे से कहा कि भाई आपने मेरे को हमेशा भेजा है, लेकिन चूंकि मैं इतना वीक हूँ सब चीजों में कि समझ में नहीं आ रहा था, तो आज मेरे ग्रैंडसन ने कहा कि बाबा आप सुन लीजिए, मैं सब कर दूंगा, तो उसी ने सब ये सेट कर दिया। Exactly, sir. Now, sir, continue Thank to you. watch our program. So, continue to watch our webinar. हाँ अब डेली अब। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, सूजन sir. आपने बहुत वेरी गुड। और सूजन की वजह से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चली थी, मेरा बूता नहीं था। सूजन ने जो मुझे हिम्मत दी थी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बहुत उस समय हेल्प की। थैंक यू वेरी मच। First batch. First batch. यस, आप पहले बैच में। Exactly. Arshi Naqvi, sir. ओके, ऑल द बेस्ट। So the final step is that the vote of thanks to express gratitude to all the people present, and especially to our dignitaries, our resource person, Dr. Arshi Naqvi, and Arshi Naqvi's mentor, Dr. D.S. Setsa, and our principal patron, Professor S.P. Singh sir, and our VC, Dr. Ashok Mittal, and all the co-conveners of this program of the organizing committee, and as well as the participants who made this day successful, this interactive section successful. Now I call upon Dr. Mahima Habil to express vote of thanks on behalf of organizing committee. Thank you, ma'am. Firstly, I would like to give glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. Further, on behalf of our chemistry department in John's College, Agra, I extend my hearty vote of thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor Ashok Mittal, for giving his concern for conducting this international webinar series, today being the 5th webinar. Thank you, sir. I also extend my sincere gratitude to our principal, sir, Professor S.P. Singh, for gracing this occasion and blessing us by his support and encouragement. I also thank our speakers, firstly, Dr. Alim Hussain, for giving us such a detailed and informative lecture, gaining interest of the audience about how can we protect bodies from harmful substances by utilizing natural plant resources and increasing our immunity for a healthier life. Second speaker, Dr. Arshi Naqvi, I thank you, ma'am, for today's talk, for such an explanatory and enriching lecture about computer-aided drug design
CAD based on computational sustainability utilization. Further, I would like to give my special thanks to our beloved head of the department, Dr. Susan Verghese, for guiding, inspiring, and motivating each one of us at every step to uptake and conduct this webinar series. I also extend my sincere thanks to Dr. Said, our ex-faculty, for joining this webinar, and our present faculty members, Dr. Rajavi John, Dr. Mohammad Anis, Dr. Shalini Nelson, Dr. Anita V.K. Anand, Mr. Praveen Tyagi, Mr. Ramkumar Saraswat, Dr. Padma Malika Hazra, and Dr. David Danish Massey for their unconditional support and cooperation. As no program can become a successful with a single person, so I extend my big thanks to all the participants who are attending this webinar for making this event successful and meaningful with your contribution. Lastly, I thank all the technical team for making this webinar for smooth running and effective deliverance. May God bless us all. Thank you. Thank you. Thank you everyone for joining. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Welcome, Dr. Alok. Thank you, ma'am. Okay. So you can also extend one talk. You can just decide the dates with us, okay? Sure, sir. Sure, ma'am. Yeah. Thank you for joining us today. Thank you very much, ma'am. Thanks. Bye-bye. Thanks. Bye-bye. Thank you. Thank you, Dr. Dhruv Bensalji, for joining us. That's so nice of you. Thank you, sir. I'm really happy to be here with you all. Okay, thank you, sir. Thank you. We are really indeed blessed with your benign presence, sir. Oh, thanks so much. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, thank you both of you for joining from Saudi Arabia. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for this opportunity. Thank you so much. Thank you. Thanks to all of you. Okay. It was really a good Okay, event. thank you. Very Thank well you so much. organized. Thank you. Okay, bye-bye. Take care. पूजा ये बंद क्यों नहीं हो रहा?